people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer, and my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Rishth Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. Another recovery story of autism treatment. Patient name, Vivan, age, 4.5 years old, disease, autism. Chief complaints, speech delay, less understanding ability, inexpressive, sensory issues, lack of focus. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 27th November 2022 at 11 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints were speech delay, unable to write and sensory issues. The child could not write by himself. He was also not very socially active. Throughout the treatment, significant improvement was seen in the child. He started writing on his own, gave answers and also became active. He started interacting more and gave answers instantly. His focus also saw an improvement. He also participated voluntarily in activities and also excelled academically. Instant responses were also seen within a few months of treatment. With improved attention span, he became quick in recognizing and mind games as well. He was able to interact more with peers, participate in class and also understand things in a better way. हाय, मेरा नाम प्रिया है एंड मेरा बेटा है 5 साल का होने वाला है एंड मुझे नवदीप सर से मेडिसिन लेते हुए मोर देन 1 ईयर हो गया है एंड आई हैव चेंज लाइक आई हैव सीन इमेंस चेंज इन माय सन लाइक जब हम यहाँ पे आए थे तो ही वाज लाइक वो एक एक वर्ड ही बोलता था एंड जब से हमने मेडिसिन शुरू की है एंड मेडिसिन के साथ साथ शिरोधारा भी इसकी मोर देन 1 ईयर से चल रही है एंड विद कंटिन्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन एंड ऑल उसमें ड्रास्टिक चेंज है। जैसे अभी वो सब कुछ अपनी चीज़ें 99% अपनी चीज़ें वो बता पाता है ईजिली। A very good afternoon to all of you in this live interactive session of ours where we generally try to discuss quality Ayurveda with you. And while we are discussing Ayurveda with you, we also try to take the maximum of your questions. हमारा प्रयास रहता है कि आयुर्वेद के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ा जाए इन लाइव सेशन से, और जिस विश्वास के साथ आप आयुर्वेद की तरफ अग्रसर हैं, जिस विश्वास के साथ आप हमारे साथ हैं, किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आयुर्वेद का इलाज करवा रहे हैं या आयुर्वेद की मदद से आप अधिक स्वास्थ्य रहना चाहते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको सही जानकारी दें आयुर्वेद के माध्यम से। इसी रिगार्ड्स में हर वेंसडे को आपके साथ मैं स्वयं जुड़ता हूं और कोशिश रहती है सही गाइडलाइंस देने की। हमारा सबसे पहला प्रयास आप लोगों के क्वेश्चंस लेने का होता है। योर क्वेश्चंस आर ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी टू अस, और उसके दौरान जब कुछ समय लग पाता है तो डेफिनेटली हम कुछ कॉमन चीजें भी आयुर्वेद की हमेशा डिस्कस किया करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेघा जी आपने अपना क्वेश्चन जो है यहाँ मेंशन किया है। मेघा जी आपने लिखा है कि हाय, I am mom of 14-year-old son who have autism with 50%. He has good eye contact since childhood, but he is premature born at 7 months, completed normal delivery with suction cup. Megha ji, as you just mentioned that 50% things he is doing perfectly, and there are 50% problems that he is facing. I would really appreciate if you can write down for me the exact concerns, like is he being more hyperactive? Is the cognition part on the lower end? So if you can detail the things up to some extent for me, that will make my task easier and I will accordingly be able to guide you. What I can guide you in the beginning itself is
Yes, there are herbs in Ayurveda which can be helpful for him. At 14 years of age, if a child is severely autistic, it becomes tough for us. But if a child is able to do a lot of many things, then it comparatively becomes possible for us. So please share some details with me. देखिए आयुर्वेद में जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो आई जनरली डिवाइड द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इनटू वेरियस phases. Below 4.5 years of age, when we talk about a child, the child is at a reflex language development age and a reflex learning age. Now, that is the age where a child will learn very quickly from the world around him. That is why a child, when the child is at a reflex language development age, a Gujarati child will speak Gujarati, he will learn Gujarati, a Bengali child will learn Bengali, and similarly, for any language. So it is a reflex language development age. So if a child comes to us below 4.5 years of age, the results are very quick and miraculous. From 4.5 years to 12 years, the child is at a trainable age. So from 4.5 to 12 years, the child is trainable. If the parents, they associate with us, they start doing what we guide, again, a child can completely come out of autism. At 14 years, I won't say that the child will be able to completely come out of autistic phase, but yes, there are lot many positive changes that are possible to be brought in the child even at the age of 14 years. So you have mentioned that he has sensory issues with finger flapping, biting hand. Meghaji, these are workable things. Please mention if you are doing any kind of applied behavior application for him. And if you can share some videos on the helpline number which are given over there, which are mentioned over there, that will really be helpful and appreciated. And all of you who are there on the live session, Seema and the team members, please do remember anyone who is there on the live session, and we are not having any coordinator who has been allocated. So immediately please allocate a doctor who can guide the patients. And all of you who are joining us, Megha ji, you, Vijay ji, and all of you, if you have been allocated any patient code, I would really appreciate if you can mention the patient code. If you don't have the patient code currently, you can mention the registered mobile number for us, where our team knows then that what has been guided to you and what needs to be done from your end. So Vijayji, you have mentioned that sir, my child is 4.5 years old, and Vijayji, as I just mentioned, that means that the child is now moving on from a reflex language development age to a trainable age. So are you doing something for the child? Any kind of ABA or OT or speech therapy or anything which is being done for the child? Please do mention it for me. प्रीत जी, आपने कहा सर मेरे नेफ्यू फुल सेंटेंसेस कब बोलेगा? स्पीच तो आ गई है आपकी मेडिसिन से। प्रीत सिंह जी, बहुत बढ़िया है कि अब स्पीच आ चुकी है। फुल सेंटेंसेस के लिए भी हम एबीए से ज़रूर वर्क करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो दवाइयाँ करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हर्ब्स करती हैं, और हर्ब्स क्या करती हैं? हर्ब्स का काम है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। कॉन्शियस माइंड को अगर वो कम वर्क कर रहा है तो हम हर्ब्स के यूज से उसकी परसेप्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चे की कॉन्शियस माइंड पे काम करने वाली हर्ब्स का इस्तेमाल करके। ठीक इसी प्रकार से अगर सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमें वर्क करना है तो वो भी हर्ब्स के साथ किया जा सकता है। लेकिन जब ये दोनों वर्क कर दिए जाते हैं तो साइड बाय साइड अप्लाइड बिहेवियर एप्लीकेशन, एबीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत जरूरी है उस पॉजिटिव माइंड कोऑर्डिनेशन को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरिस्टिक चेंजेस लाने के लिए, वो नहीं मिस करना है हमने। बहुत बार द पेरेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग, दे विल टेल अस दैट सी वी आर गेटिंग ABA डन फॉर आवर चाइल्ड। Please do remember, nobody can do ABA for your child. It is you as parents or the grandparents or those who are there with the child at home can do the ABA. So we generally believe in guiding and training the parents. They are trained and then they do the ABA for their child. Megha ji, आपने लिखा है memory is few part good and Kayan, the ID is there. So it's a request to me, Seema, as I just mentioned, the doctors are there. Dr. Ruchi, you are over there. Please do remember. Dr. Naprit, please do remember. For all patient codes where coordinators are not over there with us and the patient has mentioned the patient code, immediately a doctor needs to connect with the patient to guide over there. So in case of Kayan, the allocated doctor from our end shall be Dr. Ankita. Dr. Ankita, you need to immediately connect with Kayan. Check out. He is having a good memory, but yes, there are certain concerns.
Meghaji, you have shared your patient code and we are allocating Dr. Ankita to you for immediately connecting with you, taking further details from you. And if you are willing to share some further details, please write down those for me. Chandrika ji, आपने लिखा है, hi, I am mom of 4.1 year boy, still not speaking but do sound differently and with good eye contact. Little understanding is also there. Also reacts if we agree. Bit of command also followed by. Chandrika ji, that is really good that the child is having a bit of command following. The eye contact is good. Understanding is there. He's not speaking. Don't worry. We are at 4.1 years of age. I personally feel we will create a need for him to speak. So share all the details on the helpline number shared over there on the screen. You can share some videos also. If you are allocated any patient code or you are already consulting with one of our doctors, do let us know over there also and we'll be guiding you. So don't worry, at 4.1 years of age, if we work in a proper way, it becomes easier to share the results. The results are very quickly achievable at this age. So going ahead, Amit ji, you have shared your ID and Amit ji, as I am not having some details further with you, just give me some time and I'll be getting all the details from my team. So I'll be taking a short break over here from all of you because I need to gather some details in the cases which I mentioned. Stay tuned and I'll be collecting all the details and getting back to you. Another recovery story of autism treatment. Patient name, Vivan, age 4.5 years old, disease, autism. Chief complaints, speech delay, less understanding ability, inexpressive, sensory issues, lack of focus. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 27 November 2022 at 11 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints were speech delay, unable to write and sensory issues. The child could not write by himself. He was also not very socially active. Throughout the treatment, significant improvement was seen in the child. He started writing on his own, gave answers and also became active. He started interacting more and gave answers instantly. His focus also saw an improvement. He also participated voluntarily in activities and also excelled academically. Instant responses were also seen within a few months of treatment. With improved attention span, he became quick in recognizing and mind games as well. He was able to interact more with peers, participate in class and also understand things in a better way. हाय, मेरा नाम प्रिया है एंड मेरा बेटा है 5 साल का होने वाला है एंड मुझे नवदीप सर से मेडिसिन लेते हुए मोर देन 1 ईयर हो गया है एंड आई हैव चेंज लाइक आई हैव सीन इमेंस चेंज इन माय सन. लाइक जब हम यहाँ पे आए थे तो ही वॉज लाइक वो एक एक वर्ड ही बोलता था एंड जब से हमने मेडिसिन शुरू की है एंड मेडिसिन के साथ साथ शिरोधारा भी इसकी मोर देन 1 ईयर से चल रही है एंड विद कंटिन्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन एंड ऑल उसमें ड्रास्टिक चेंज है. जैसे अभी वो सब कुछ अपनी चीज़ें 99% अपनी चीज़ें वो बता पाता है ईजिली एंड दैट टू दे स्टार्टेड मेकिंग फुल सेंटेंसेज ऑल्सो. क्लास में भी अकेडमिकली ही इज गोइंग सुपरबली ऑसम. ही हैज स्कोर्ड 88% इन हिज लास्ट टर्म एंड जहाँ पे जब वो नर्सरी में था ही जस्ट स्कोर्ड 55%, नॉट इवन 50%. एंड अभी जस्ट टर्म ए में ही इज इन जूनियर केजी. अभी टर्म ए में उसके 88% नंबर आए हैं. नाउ ही हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो. पहले वो मतलब पकड़ के लिखता था, पेंसिल पकड़ के, उसका ग्रिप भी प्रॉपर नहीं था बट अब वो लिखने भी लग गया है. प्लस मुझे जो मेडिसिन से जो मुझे मेन फ़र्क दिखा है दैट इज़ सेंस. जो मुझे चाहिए था कि सेंस में थोड़ी सी डेवलपमेंट. पहले उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई घर में आ रहा है जा रहा है, वो जस्ट कमांड वाइज ही चल रहा था. लाइक ही स्टार्टेड फॉलोइंग माई कमांड्स लेकिन अपने दिमाग से वो कुछ नहीं कर रहा था. बट जब से मेडिसिन लेना शुरू किया आफ्टर 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं. 3 मंथ्स में धीरे धीरे चेंज आए. अब विद इन अ ईयर तो ड्रास्टिक चेंज है. जैसे उसको देख के आप बोल ही नहीं सकते हो कि दैट ही हैड माइल्ड ऑटिज्म. तो उसको माइल्ड ऑटिज्म ही था बट अब वो माइल्ड ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम से भी निकल गए. अब जस्ट उसके थोड़े सिम्टम्स रह गए हैं एंड वी आर स्टिल इन टच विद नवदीप सर. वी आर स्टिल टेकिंग द मेडिसिन. उनकी जो भी गाइडलाइंस है, बीट डाइट, बीट उनका यंत्र, वी आर डूइंग दैट रिलीजियसली एंड आई मीन इट. विद दैट हम उनको हीलिंग म्यूजिक भी सिखाते हैं जिससे बच्चा इंटरनली भी हील होता है. So welcome back and sincere apologies for the short break. Actually, I was to gather some information regarding your patient codes because the details are there with me being shared by you and I wanted to be very particular about
the fact that I get everything which you are mentioning. The next question which I can see over here is of Vijay Verma ji. Vijay ji, आपने लिखा sir, my child is 4.5 years old. My speech delay है और OT स्पीच थेरेपी ले रहे हैं बट ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। विजय जी, बहुत बार क्या होता है जब 4.5 ईयर्स का बच्चा हो जाता है तो उस स्टेज पे OT की जगह में ABA करवानी पड़ती है। देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफिंग देना चाहूँगा कहाँ OT की ज़रूरत है और कहाँ ABA की ज़रूरत है। देखिए, OT जो है, OT एक कमांडिंग थेरेपी है। कई बार ना बच्चा सीवियरली ऑटिस्टिक होता है। अब वो सीवियरली ऑटिस्टिक है, आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, आपकी उंगली भी नहीं पकड़ रहा कि आपको पॉइंट आउट करे किसी चीज के लिए कि मुझे ये चीज चाहिए। वो आपसे कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा बच्चा। अब ऐसी ही अगर सीवियरली ऑटिस्टिक कंडीशन है तो वहां पर डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारी चॉइस है। वहां स्पीच थेरेपी भी शुरू में कुछ नहीं करेगी, सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और अगर हमें लगता है कि जो बच्चा है वो बोलना चाह रहा है लेकिन वो क्लियरली नहीं बोल पा रहा, बैबलिंग कर रहा है, वहां पे हमें स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जहां पर ये दोनों ही चीजें नहीं है, बच्चे का दिल कर रहा है तो पापा पापा बोल रहा है, कई बार पापा को पापा नहीं बोल रहा, वैसे दिन में 10 बार पापा पापा कर रहा है, और कई बार कर भी रहा है, पापा को पापा बोल भी रहा है, मम्मा को मम्मा बोल भी रहा है, लेकिन वो कभी कभार रूटीन में नहीं बोल रहा। अब यहाँ उस बच्चे की मजबूरी नहीं है कि उसको पापा बोलना नहीं आता है या उसे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती या आपको नोटिस नहीं कर रहा। यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोई खास लाभ नहीं है, यहाँ ABA का लाभ है। सुखराज जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए, 5 साल का बच्चा है, क्या 100% ऑटिज्म क्योरेबल है? देखिए, ऑटिज्म जिन बच्चों में हम पकड़ते हैं वहाँ पूरी तरह क्योरेबल होता है, लेकिन हमें जरूरत होती है बच्चे के वीडियोस की ताकि हम अच्छे से देख पाए। सो मैं आगे आपके क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ दोबारा से, और हम चलते हैं रेनिटा फर्नांडिस। आपने देखा सर, माय सन इज स्क्रीमिंग एंड ही डजंट टॉक समटाइम्स, ही हैज गुड आई कांटेक्ट बट समटाइम ही इग्नोर्स। So here I would like to tell you, Ranita ji, that see, since your son is screaming, you have mentioned, it may be a case of hyperactivity and he has a good eye contact. Please also share me the exact age of your child, and if anything has been done on the psychotherapy part for your child, I would also like to go through that also. And when mother is pregnant, is suffering from fever, doctor said will say, one of the patient codes 467671. The details have been shared by me, by the coordinator Narinder, but the details are not medically correct. So I would request one of the doctors to get back to this patient 467671, Amit Kumar ji, so that we can have better details. And Amit ji, I would really appreciate if you are there with us and in this live, please share some details further for me to be able to evaluate the case in a better way and replying you back in a proper way. And then we have, sir, I am mom of 10 years old daughter. She is less concentration and less attention, 50% autism. Speech has less clarity in word and doing. The ID is 468093. So as you have mentioned that yes, there are some words in your daughter's case. Now that means that yes, she is having the capability of using those words. Generally at 10 years of age, we focus on the subconscious mind. We focus on ensuring that the child is not hyperactive, and at the same time, we focus towards improving the cognition of the child. So that is what we shall be doing in case of your daughter. Don't worry. And you have already shared the patient code with me. And over here, the allocated doctor for you shall be Dr. Naprit. Dr. Naprit will be the allocated doctor. She will be reaching you out shortly and she will be guiding you in a proper way after discussing everything with me. Then we have Veena ji there with us. And Veena ji, you have written Ivanka Rodriguez, 6 years non-verbal. I am giving only Brenoir, can't agree to any other medication like cucurbita oil and with Jetamansuel. She gets some time of fear. Veena ji, if you are only currently giving her Brenoir, what we can do is we can go for a better dosage of Brenoir since she's already 6 years in age. So please do ensure that then the dosage of Brenoir needs to be on a high dose. If we are giving a high dosage of Brenoir to your child, even if she's not taking rest of the thing, it is good enough. But if the Brenoir dosage is also less, because for a 6-year-old child, if the weight of the child is around 30 to 40, 30 kgs also, if it is 30 kgs or 25 to 30 kgs, it should be at least
20 ml of Brenoir in the morning, 20 ml in the afternoon, and 30 ml at night, if we are only and only to rely on Brenoir. But please do not forget to do the Shiropichu for her, and that is what we need to give. See, otherwise cucurbita is good for her. You can mix up cucurbita oil while cooking something for her. There is no harm in that. Cucurbita basically is pumpkin oil we are using. So pumpkin oil can be added in various food things. They are not bad for her. And don't forget to regularly take ABA. Applied behavior application is really very important for your child. When we talk about hyperactivity and controlling hyperactivity in a positive way, that means involving the child in such a way that the excess energy is neutralized in a positive way. Sedating a child is not the right method to control hyperactivity for a child. So that is why applied behavior application becomes even more important. And then I am having details from Dr. Alka in regards of Megha Patel ji. Age is 2.5 years, diagnosed. He was a premature child and at birth time in NICU for 2 months. Salmonella infection was there, 5 day. There was hematemesis, and after complications, seizures started. Last year, seizures they came, and a 5 years allopathic medication was given. Now everything is stopped. Verbally is good. Ayurvedic or homeopathic medicine is also given. Therapies are also going on, and going to special school. There are sensory issues. So Meghaji, a brief detail has been shared with me by my doctors. Please share some videos of her. Since you have already given Ayurveda, you are giving homeopathy. I would also like to have the details of what exactly is being given in those regards. As far as sensory issues are concerned, Abhyangam, which will be guiding to the child, is really very good in bringing down those sensory issues. The age currently, as it has been mentioned, that now it's 14 years, which you mentioned. So now we are at 14 years, so we need to be giving everything in a good dosage for him to improve. So if you are willing to use some Ayurveda, I would firstly like to have the details of what exactly in Ayurveda was given earlier to the child. And going ahead, Somnath Sardik ji, 3.5 years daughter, not speaking, no response to instructions, kept crying if things not happen as she like. For example, if she wants to go out and she always want to eat something. Somnath ji, as you have mentioned that the daughter's age is 3.5 years and she's not speaking, our first target will be making her verbal. See, whenever I come across any child who is comparatively at a younger age, and there are multiple things which the parents are worried about, like less eye contact, being hyperactive, paying less attention, I always guide the parents that see, our target should be making the child verbal. Rest everything is very easy when we have to do it for a younger child. That making the child verbal is the biggest thing and the most important thing, because once a child becomes verbal and once the child starts communicating through language, at least 50% of other problems automatically come down. So don't worry about that. Share some videos, Somnaji. Since you have not shared your patient code or details, I would appreciate if you can share some details so that the team can then get back to you and guide you in a better way. And going ahead, Twinkleji, you have mentioned, sir, my cousin has some symptoms in speech delay and he doesn't talk properly. Twinkleji, I would like to have some further details. The age is something which is really very important for us to know. And the Panchkarma therapies for Chandigarh at Chandigarh hospital are really very good ones for the children suffering from autism, because see, when we talk about this part of our scalp, this is known as Brahmarandra. And when we talk about Brahmarandra basically is that part of our brain which, if nourished in a proper way, the coordination between the conscious and the subconscious miraculously improves. And that can be done by Dhara, that can be done by Shurobasti, that can up to some extent be done by Shuropichu. Then there is Nasyam that can be done. So there are Panchkarma therapies which really work for children. And the best part is that most of the insurance companies are on cashless panel with us, and those which are not on cashless panel, they nowadays give complete claim for Ayurvedic treatments. So we should take benefit of that, and it's always advisable if we can spare out some valuable time for our children, because if a child is autistic and we really want the child to completely come out of autism,
it becomes so very important that the right kind of steps are taken on war footage for the child at the right age. So if a child is at an age which is comparatively younger, we should not waste even a single day. And if a child is at an older age, still a lot can be done. But again, the parents need to be in a positive frame of mind that yes, the things are going to work. Going ahead and sir, I am mom of 10 years old, so I took the question and I hope I gave the required details to you also. And it has been mentioned that diagnosed at the age of 4.5 years, therapy is going on, concentration level is low, speech में clarity नहीं है, attention कम है, आर्ट में इंटरेस्ट है. जनरली जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनका आर्ट में इंटरेस्ट बढ़िया होता है, और क्योंकि इनका डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं बहुत बार ऑटिस्टिक बच्चे, क्योंकि हमें इन्हें नॉर्मल लाइफ में और बेटर लाना है तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में हम इस्तेमाल करेंगे आपकी बिटिया के केस में. सो प्लीज़ आप कुछ वीडियो शेयर करिए, बाकी मेरी टीम, मेरे डॉक्टर्स मेरे से डिस्कस करेंगे और आपको हम पूरा इस रिगार्ड में गाइडेंस ज़रूर देंगे. हम आगे चलते हैं और इवांका जी, आपके केस में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको हम एक डॉक्टर एलोकेट कर रहे हैं. वो डॉक्टर आपको डिटेल्स जल्दी ही देंगे मेरे साथ सारा कुछ डिस्कस करने के बाद. हम आगे चलते हैं और पेशेंट कोड है 467671. अमित जी आपने लिखा है, सर मेरा बेटा 8 साल का है, वो बोल नहीं पाता है बट वो सब कुछ समझता है. अमित जी, हम पहले सिंगल वर्ड से मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे कि वो सिंगल वर्ड्स बोल पाए. अगर वो बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है और 8 साल का है, तो शुरुआत में उसे शब्दों के थ्रू इंटरेक्ट कैसे करते हैं ये हम एबीए का सहारा लेके और कुछ आयुर्वेद का सहारा लेकर उसे सिखाएंगे. हम शुरू में जैसे पापा, मम्मा, बिस्किट, एप्पल, बाजार, सिंगल वर्ड से उसे कोऑर्डिनेट करवाना स्टार्ट करेंगे. लेकिन जरूरी हो जाएगा यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट. देखिए, इस चीज को आप प्लीज सारे ही समझ कर रखिए. जब बच्चे की एज बड़ी हो गई है, छोटे बच्चे में भी हमें पेरेंट्स की कोऑपरेशन चाहिए है, लेकिन वहां थोड़ी कम भी कोऑपरेशन हो तो काम चलता है. बड़े बच्चे में हमने पेरेंट्स को कुछ चीजें सिखानी है और हम बहुत हद तक डिपेंडेंट है कि पेरेंट्स हमारी बातें माने या फिर हमारे पास आकर इलाज कराए. दोनों में से एक चीज. अगर आप घर पे करवा रहे हैं, मेरी विनती है बातें जरूर मानिएगा. हम आगे चलते हैं और साक्षी जी, आप देखा, सर माय रिलेटिव टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम एनडी केयर, लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट सर काइंडली गाइड, एज 11 years, हैविंग बीएमआई 25.5, बिट ओवरवेट. चतुर्बीज, साक्षी जी चतुर्बीज का इस्तेमाल कराइए. यवानी, चंद्रशूर, मेथी, मंगराल. अगर आप किसी मेडिसिन की तरफ जाना चाहती हैं तो हमारे जो थायरो केयर मेडिकेशन है उसमें चतुर्बीज का इस्तेमाल किया गया है. जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उस पर वर्क करती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं और उसके साथ साथ बहुत जल्दी जो वेट है उससे कंट्रोल में रहता है. हम आगे चलते हैं और आगे मैं देख पा रहा हूँ आपके कई सारे क्वेश्चंस हैं. मेरी कोशिश है, अगर कोई टेक्निकल, प्रीति जी आपने जानना चाहा है. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रीति है, मेरे बच्चे का नेम रुद्रांश है, वो 3 साल का है, बात बोलता है पर सेंटेंस जोड़कर बात नहीं बोलता है, बताएं हम क्या करें. देखिए, अगर सेंटेंस बोलकर वो बात नहीं कर रहा है लेकिन बात बोल रहा है, तो क्या वो एक एक, दो दो, तीन तीन वर्ड्स यूज कर रहा है? जैसे पापा, बाजार जाना, क्या वो केवल ग्रामेटिकल चीजें यूज नहीं कर रहा है, बीच में फिलर्स यूज नहीं कर रहा है, सेंटेंस प्रॉपर नहीं बोल रहा है, बाकी वर्ड्स बोल रहा है? अगर ऐसा है देन हमें एबीए का सहारा अधिक लेना पड़ेगा और थोड़ा बच्चा और सारस्वत के योगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उसकी हाइपर एक्टिविटी भी है क्या, ये भी प्लीज आप हमें मेंशन कर दीजिए. हरसिमरन जी, जैसा कि आपने चंडीगढ़ का जानना चाहा है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, क्योंकि कल हमारी अमृतसर के अंदर ओपीडी रहेगी. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक शायद मेरा चंडीगढ़ चक्कर लगेगा. हाँ, अगर मैं भारत से बाहर हुआ फिर इस मंथ चंडीगढ़ मेरा विजिट नहीं हो पाएगा. तो ये टीम आपको जल्दी ही जो है वो आपको गाइड कर देंगे इस रिगार्ड्स में. हमें ये भी पता चला है कि ईईजी जो है रुद्रांश के केस में करवाई गई है और जो ईईजी की रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल नहीं है. एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसके लिए चल रहा है. तो देखिए, जब भी कभी सोडियम वेल्पोरेट या कार्बामेज़ेपिन या जनरल दवाइयाँ जो चलाई जाती हैं सीजर्स के लिए या एबनॉर्मल ईईजी के लिए, वो इस्तेमाल की जाती हैं, उससे भी बच्चे में स्लोनेस आती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ी घट जाती है. तो प्लीज़ वो डिटेल्स भी शेयर करें, एलोपैथी में भी आप क्या दे रहे हैं.
भीम तिवारी जी आपने लिखा है कि माई बेबी देवांश इज नॉट बिहेविंग नॉर्मली, ही इज 6.5 years old but can't talk properly. He doesn't know the answer of what, why, where and all. He is not able to explain the things which are having. देखिए, since your child is 6.5 year old and he is not behaving normally and he can't talk properly, Bhimji, but then he is having words. So that means that we need to be working on the cognition of your child. When we talk about cognition, it is more about the conscious and subconscious coordination speed. That is what we need to work on. So it's good that he's already verbal. We need not work on the verbal aspect too much. So in the beginning itself, we shall be working on the cognition part so that you can see the answers being more intelligent and him being more oriented to space and time and place than he currently is. But again, I would like to have your patient code or some details where my team can connect back with you and can guide you in this regards. And आयुष कुमार जी आपने बताया है कि योर मदर इज टेकिंग ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, ब्रेन के रेडिएशन से बहुत पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हुआ है, सिम्टम्स आर गोइंग डाउन, अभी कीमो हो रही है एवरी 21 days। आयुष जी बहुत बढ़िया है, परमात्मा रहमत करेगा। घर के अंदर 14 गमले आपको लगाने हैं। पहले गमले में पहले दिन आप वीट बीज दीजिए, दूसरे में दूसरे दिन, तीसरे में तीसरे दिन। जब आप 10वें गमले पे पहुंचेंगे तो पहले गमले के अंदर वीट के छोटे छोटे पौधे निकल आए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है उसका जूस भी आप अपने मदर का स्टार्ट करवाइए। इसके साथ साथ एप्पल के सीड्स, सेब के 2 सीड्स रोज के उनको खिलाने हैं, सीड्स, और ये खाली पेट खिलाएं। ये साथ में आप प्लीज ऐड कर दीजिए। और रनीता जी के केस में वीडियोस हमारे पास आ चुके हैं जी, और आपने वीडियो शेयर किए हैं। डेफिनेटली वी विल बी एनालाइजिंग दोज वीडियोस एंड शेयरिंग विद यू। गिव अस सम टाइम। सो मेरे लाइव के बाद मेरे से डिस्कस करके आपको पूरा इस रिगार्ड्स में जवाब दिया जाता है। और हम आगे चलते हैं। बहुत से क्वेश्चंस मिस भी हो रहे होंगे, उसके लिए माफी चाहूंगा। देवांश के केस में बिहेवियर की प्रॉब्लम है, आई कांटेक्ट, स्पीच डिले, मेन कंसर्न सोशलाइजेशन लेस है, अंडरस्टैंडिंग लेस है, नॉट इन्वॉल्व विद अदर चिल्ड्रन। देखिए, जब हम बात सोशलाइजेशन की कर रहे हैं, सबसे टफ सोशलाइजेशन लाना होता है एक ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर। लेकिन घबराए नहीं, पूरी लाई जाएगी। उसके अलग मेथड्स हैं, आपको कुछ सिखाएंगे। किसी एक खास चीज में बच्चे के ऊपर वर्क करके उसे टैलेंटेड बनाएंगे ताकि वो कंफर्टेबल फील करे दूसरे बच्चों के आगे। सोशलाइजेशन इंप्रूव करने के थोड़े मेथड्स डिफरेंट है। जनरली जो घर पे हम एबीए पेरेंट से करवाते हैं उससे इतनी सोशलाइजेशन नहीं बढ़ती। उसके लिए डिफरेंट वाले जो हमें है वो एक्टिविटीज करने पड़ते हैं। हम आगे चलते हैं। और श्वेता झा जी आपने लिखा है, डियर सर, आई एम श्वेता, मेरे बेटे 6 साल का है, वो पिछले 2 साल से ऑटिज्म फेस कर रहा है। वो हर चीज को मुंह में डालकर चबाता है, हर वक्त वो चीजों को पकड़ता रहता है, वो बहुत ज्यादा आवाजें निकालता रहता है हर वक्त। और सो बेसिकली श्वेता जी देखिए, ये कॉमन साइंस है। ब्लैबरिंग करना, जार्गन साउंड्स निकालना, मुंह में माउथिंग करना, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो एक ऑटिस्टिक बच्चे के केस में आती हैं, जो जब हम सबकॉन्शियस माइंड, धारणात्मक बुद्धि के ऊपर उसके वर्क करते हैं और साथ में खास प्रकार से एबीए टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत जल्दी घटती हैं श्वेता जी। तो घबराइए नहीं, आप प्लीज पेशेंट कोड आपने मेंशन कर दिया है, टीम आपके साथ कांटेक्ट में आकर के आपको पूरी जो जानकारी है वो दी जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत लगाएं। बाकी अधिक आपको लगे कंसर्न है तो मैं अभी एक ओपीडी तो मेरी कम से कम भारत में होएगी, उसके बाद दोबारा वापस भी आऊंगा विद आफ्टर ब्रेक ऑफ अराउंड 1.5 month। सो आइदर अभी या फिर तब आप मुझसे मिल सकते हैं। मनीषा जी आपने कहा सर ऑटिज्म इज क्योरेबल फॉर 14 years old चाइल्ड। नहीं जी, माफी चाहूंगा। 14 years old में वी कैन गिव इम्प्रूवमेंट, अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स कैन अकर, बट वी कैन नॉट कमिट कंप्लीट क्योर ऑन इमीडिएट बेसिस राइट एट फर्स्ट जंक्चर। हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत कम हैं तो संभव है। सो वी नीड टू एनालाइज द केस। सो इसी के साथ साथ मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मेरे को पेशेंट्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स करनी है। माफी चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं दे पाया हूं।
सेरेब्रल पैल्सी के केस में 467690 आपने जानना चाहा है, इज ऑलवेज लाइंग इन बेड. So whenever we talk about cerebral palsy, and as we can see there is mild cerebral atrophy of brain, we'll have to work on the brain over here through see how many neurons we can revive. Neurons regenerate नहीं किए जा सकते, लेकिन functionally dead neurons में से कुछ neurons को revive किया जा सकता है आयुर्वेद की कुछ विधियों से. So वो हमें देखना होगा. आप प्लीज एक बार डिटेल्स अपनी सारी की सारी हमारे साथ शेयर जरूर करें. जो क्वेश्चंस हमारे से मिस हुए हैं उन सभी के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये डेफिनेटली आपके साथ प्रॉमिस रहेगा कि हर वो सवाल जिसके साथ आपने पेशेंट कोड या डिटेल्स हमें दी हैं, उन सभी केसेस में मेरी टीम आपके साथ आज के आज ही कनेक्ट करके आपको सही गाइड ज़रूर करेगी. मनोज जी, आपने कहा सर मेरे बच्चे को हाइपर एक्टिविटी एंड माइल्ड ऑटिज्म है, 4.5 इयर्स. डोंट वरी मनोज जी, हाइपर एक्टिविटी तो ब्रेनो आर से ही बहुत जल्दी कम हो जाएगी. यू कैन यूज ब्रेनो आर टू ब्रिंग डाउन द हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर चाइल्ड. तो उससे हाइपर एक्टिविटी कम हो सकती है. उसके साथ साथ बाकी कंप्लीट और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जो टीम है वो आपके साथ कनेक्ट करेगी, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी. रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि आप प्लीज कुछ वीडियो जरूर अपने बेटे के शेयर करें. देखिए, ऑटिज्म की बात कर रहे हैं. ऑटिज्म में आयुर्वेद का काम है मानसिक अवस्था पे काम करके बच्चे को उस मानसिक अवस्था तक लेकर के आना जहां उसका मन गाइडलाइंस को फॉलो करने में बेटर हो. आज मान लीजिए हम दुखी हैं, हमारा मन विचलित है किसी कारण से, और हमें कोई लाख बार प्रयास करता है कि ऐसा कर लो, एक नॉर्मल कार्य जो हम रोज कर सकते हैं उसको करने के लिए अगर कोई बोलता है तो बहुत बार हम वो नॉर्मल कार्य भी नहीं कर पाते. तो वहां जरूरत हो जाती है उस विचलित मन को बच्चे के केस में खास तौर पे कुछ खास माइंड बूस्टिंग हर्ब्स के साथ, सबकॉन्शियस पे काम करने वाली हर्ब्स के साथ एक ऐसी सिचुएशन पर लेकर आना जहां उसकी एक्सेप्टेंस, रिसेप्टिविटी बढ़े, जहां हाइपर एक्टिविटी कम होती चली जाए. क्योंकि बच्चा अगर सुनेगा तो बहुत कुछ ठीक कर पाएगा. बच्चा अगर बहुत तेजी से काम करने की कोशिश नहीं करेगा तब भी बहुत कुछ कर पाएगा. सो इसी कारण से हम हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. जटामांसी हो गई, तगर हो गया, उस्तखदूस हो गया, रुद्राक्ष हो गया, ऐसी हर्ब्स को हम ब्रेनो आर के माध्यम से बच्चों के केस में यूज करते हैं. कुछ बच्चों में ब्रेनो ए का भी इस्तेमाल किया जाता है. और ये हर्ब्स जो बदलाव ला रही होती हैं बॉडी के अंदर, उन बदलावों के लिए हम साथ के साथ उसका लाभ उठाने के लिए, क्योंकि एंड में हमें चाहिए क्या, एक नॉर्मल बच्चा, शब्दों को इस्तेमाल करता बच्चा, लेस हाइपर एक्टिव बच्चा. अब ये बदलाव, ये आदतें हम बदलते हैं ABA के थ्रू. क्योंकि देखिए, आज मान लीजिए एक बच्चा बहुत अच्छा भी है और पेरेंट्स कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खाना खाने से पहले ना अपने हाथ धोए. अब क्या कोई दवा बच्चे को मजबूर कर सकती है कि बच्चा खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए? कभी भी नहीं. हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी. ठीक इसी प्रकार से ऑटिस्टिक बच्चों में शब्दों का इस्तेमाल ना करना एक आदत बन चुका होता है. हाइपर एक्टिव रहना आदत बन चुका होता है. इनकम्प्लीट सेंटेंस बोलना आदत बन चुका होता है. कंसंट्रेशन कम रखना आदत बन चुका होता है. तो जहां एक तरफ हर्ब्स ये सुनिश्चित करती हैं कि कमियों को दूर किया जाए, वहीं ABA सुनिश्चित करती है कि आदतों को रेक्टिफाई किया जाए. प्लीज दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलाएं, बच्चा जरूर ऑटिज्म से बाहर आ जाएगा. सो इसी उम्मीद के साथ परमात्मा से यही दुआ करते हुए कि आप सभी लोग रिष्ट पुष्ट रहें, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आपसे आज्ञा चाहता हूं. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Empowering lives. Group activities for autism at Handicare Nirogam Private Limited. A very marked problem which is being faced by majority of autistic kids is socialization. The children, they do not perform up to the expectations of their parents, the society, when it comes on the part of social interaction with other children. And that is why, keeping this in mind, we at our Rish Push Center Chandigarh go for various social activities. Inspired by the rich culture of Amritsar, we are rooted in tradition and diversity. Drawing energy from the vibrant city of Chandigarh, we embrace progress and inclusivity at Handicare Nirogam. Why stay at Handicare Nirogam for best results in autism? Ayurveda, Panchakarma, psychotherapy, ABA, OT and speech therapy,
yoga and naturopathy, group activities, outdoor activities, all under one roof. Welcome to NDK Nirugam, where we believe in creating a supportive community for individuals with autism. Today, we are excited to share how our carefully crafted group activities are making a positive impact on the lives of those we serve. At NDK Nirogam, our team is dedicated to designing activities that cater to the unique needs of individuals on the autism spectrum. Our group activities are more than just fun. They are therapeutic and designed to foster social skills, sensory integration, and overall well-being. Our therapies provide a non-verbal way for individuals with autism to communicate and express themselves. It's amazing to see the creativity that unfolds during these sessions. Exercise is not only beneficial for physical health, but also for emotional well-being. Our group exercise sessions focus on building strength, coordination, and social skills. Specialized Panchkarma therapies at Wrist Pusht. Another recovery story of autism treatment. Patient name, Vivan, age, 4.5 years old, disease, autism. Chief complaints, speech delay, less understanding ability, inexpressive, sensory issues, lack of focus. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 27 November 2022 at 11 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints were speech delay, unable to write, and sensory issues. The child could not write by himself. He was also not very socially active. Throughout the treatment, significant improvement was seen in the child. He started writing on his own, gave answers, and also became active. He started interacting more and gave answers instantly. His focus also saw an improvement. He also participated voluntarily in activities and also excelled academically. Instant responses were also seen within a few months of treatment. With improved attention span, he became quick in recognizing and mind games as well. He was able to interact more with peers, participate in class, and also understand things in a better way. हाय, मेरा नाम प्रिया है एंड मेरा बेटा है 5 साल का होने वाला है एंड मुझे नवदीप सर से मेडिसिन लेते हुए मोर देन 1 ईयर हो गया है एंड आई हैव चेंज लाइक आई हैव सीन इमेंस चेंज इन माय सन. लाइक जब हम यहाँ पे आए थे तो ही वॉज लाइक वो एक वर्ड ही बोलता था एंड जब से हमने मेडिसिन शुरू की है एंड मेडिसिन के साथ साथ शिरोधारा भी इसकी मोर देन 1 ईयर से चल रही है एंड विद कंटिन्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन एंड ऑल उसमें ड्रास्टिक चेंज है. जैसे अभी वो सब कुछ अपनी चीज़ें 99% अपनी चीज़ें वो बता पाता है ईजिली एंड दैट टू दे स्टार्टेड मेकिंग फुल सेंटेंसेज ऑल्सो. क्लास में भी अकेडमिकली ही इज़ गोइंग सुपरबली ऑसम. ही हैज स्कोर्ड 88% इन हिज लास्ट टर्म एंड जहाँ पे जब वो नर्सरी में था ही जस्ट स्कोर्ड 55%, नॉट इवन 50%. एंड अभी जस्ट टर्म ए में ही इज़ इन जूनियर केजी. अभी टर्म ए में उसके 88% नंबर आए हैं. नाउ ही हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो. पहले वो मतलब पकड़ के लिखता था, पेंसिल पकड़ के, उसका ग्रिप भी प्रॉपर नहीं था बट अब वो लिखने भी लग गया है. प्लस मुझे जो मेडिसिन से जो मुझे मेन फ़र्क दिखा है दैट इज़ सेंस. जो मुझे चाहिए था कि सेंस में थोड़ी सी डेवलपमेंट. पहले उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई घर में आ रहा है जा रहा है, वो जस्ट कमांड वाइज ही चल रहा था. लाइक ही स्टार्टेड फॉलोइंग माई कमांड्स लेकिन अपने दिमाग से वो कुछ नहीं कर रहा था. बट जब से मेडिसिन लेना शुरू किया आफ्टर 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं. 3 मंथ्स में धीरे धीरे चेंज है. अब विद इन अ ईयर तो ड्रास्टिक चेंज है. जैसे उसको देख के आप बोल ही नहीं सकते हो कि दैट ही हैड माइल्ड ऑटिज्म. तो उसको माइल्ड ऑटिज्म ही था बट अब वो माइल्ड ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम से भी निकल गया. अब जस्ट उसके थोड़े सिम्टम्स रह गए हैं एंड वी आर स्टिल इन टच विद नवदीप सर. वी आर स्टिल टेकिंग द मेडिसिन. उनकी जो भी गाइडलाइंस है, बीट डायट, बीट उनका यंत्र, वी आर डूइंग दैट रिलीजियसली एंड आई मीन इट. विद दैट हम उनको हीलिंग म्यूजिक भी सिखाते हैं जिससे बच्चा इंटरनली भी हील होता है. मेडिसिन हम दे रहे हैं. सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दी मेडिसिन एंड फैसिलिटीज. द डॉक्टर्स आर एवरी टाइम अवेलेबल. और मुझे हफ्ते में 1 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे हफ्ते में 1 कॉल ज़रूर आता है यहाँ से दैट यू नो वेदर द थिंग्स आर गोइंग राइट. विवान के बारे में दे आस्क कि वो कैसा चल रहा है. तो लाइक दे आर इन टच. द होल टीम इज इन टच विद मी मोर देन 1 ईयर. मेडिसिन यहाँ पे टाइम से आ रही है. हमें घर पे डिलीवरी मिल जाती है. जब हमें आना होता है नवदीप सर के हमें कॉल्स आ जाते हैं दैट यू नो वो अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू मीट. तो द एज अ क्रक्स आई एम सेटिस्फाइड विद द मेडिसिन ऑल्सो एंड विद द स्टाफ ऑल्सो.
Thank you. Another recovery story of autism treatment. Patient name, Bhanu Pratap, age 6.7 years old, disease, autism. Chief complaints, hyperactivity, speech delay, communication, short sitting, problem with understanding. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 2nd November 2022 at 11 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints of the parents of the child were hyperactivity, speech delay and short periods of sitting. The child also did not communicate much. Within a year of treatment from ND Care, a significant improvement was witnessed in the child. His condition showed positive results with reduced hyperactivity, improved speech, better understanding and longer sitting. He even communicated and expressed his feelings in detail. Participation amongst peers has also increased. The child also participated actively in the school activities and showcased confidence. बच्चे का ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है, तो हमारे बच्चे की बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो हमारा बच्चा बात भी नहीं करता था, कोई समझता नहीं था, अब इसमें स्पीच भी आई है, अंडरस्टैंडिंग आई है जी। अभी मतलब बैठ जाता है, पहले 10 मिनट भी बैठता था, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चे को, पहले कुछ नहीं था। तो सारी हमारी दुकान है ना, पहले हमें पता नहीं था, सबका को पता होता तो हम पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते थे, तो हम खुश हैं बच्चे के लिए। में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उसमें आई कॉन्टेक्ट आ गया है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है। फर्स्ट पंचकर्मा से ही दिखने लग गया था कि गोकुल में थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है, एक आधे वर्ड्स भी बोलना शुरू कर दिया था। 5वें में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है, उसमें इमोशंस आ गए हैं, वो कुछ बातें अंडरस्टैंड भी करने लगे हैं। मेरे बेटे की अंडरस्टैंडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। You can see our therapists really improved the understanding of autistic kids. पहले शुरू में मेरा बच्चा चीखते थे, हर टाइम अचानक चीखते थे, हर टाइम चिड़चिड़ापन रहते थे, हाइपर था, बहुत ही हाइपर था। मेडिसिन लेने के बाद उसका ये चिड़चिड़ापन, एग्रेशन बहुत ही कम गया है। मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा भी दिया है और साथ साथ में साइकोथेरेपी भी चल रहे थे। तो ये साइकोथेरेपी, पंचकर्मा और मेडिसिन लाके कुल मिला के मेरा बच्चा अभी बहुत ही बेटर है। You can see our therapists really improved the hyperactivity of autism kids. The Panchkarma therapy here, which has Shirodhara and Nasya in it, and it is really recommended, very relaxing, and everybody and whosoever needs it must go through it. हम लोग अपने बेटे के लिए आए हुए हैं यहाँ पे आयुष्मान बंधु, जिसका उम्र लगभग 14 साल है। यहाँ हम लोग पंचकर्मा थेरेपी लिए। यहाँ का माहौल इतना फ्रेंडली, डॉक्टर, स्टाफ सारे कुछ बहुत अच्छे लगे। पहले ये ना बोलती थी ना कुछ समझती थी, लेकिन जब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। I came in contact with Dr. Navdeep Sharma regarding my son Shitik. So he is 3-year-old and he is having speech delay and he is having some ADHD behavior. It was a good experience. But one thing I can say for sure that my son's sleep routine is pretty much better than before. We came to this center, had an appointment with the doctor. We had a great session with him. He has immense knowledge about autism. He is specialized in autism and Ayurvedic treatments. The therapies were done very well, and the housekeeping and everything was clean. The rooms are clean, so we had a good stay, good interaction with the doctors and therapists. So overall, it was a good experience. उसका पंचकर्मा हुआ तभी उसमें जो हाइपर एक्टिविटी था उसमें हमें बहुत फ़र्क नज़र आया, और उसकी स्पेशली जो स्लीपिंग साइकिल थी वो उसकी एकदम से सेट हो गई। जैसे वो रात में पहले हाइपर होकर उठ जाता था, अभी वो भी उसका बंद हो गया, अभी उसको स्ट्रेट स्लीप मिलती है। NDK Nirugam, we are committed to creating a supportive and inclusive space for individuals with autism. Our group activities are designed to empower and enrich lives, promoting social connections and overall well-being. Now, these activities are one of the most important part of the treatment. Once we talk about a perfect social interaction,
that can only happen when social activities are being planned. If you are looking for a place where your loved ones can thrive, come join us at NDK. Together, let's empower lives and build a brighter future. Helps thousands of children around the world to recover successfully. He believes in the holistic healing power of Ayurveda, addressing the root cause of autism rather than just treating the symptoms. Dr. Sharma combines traditional Ayurvedic practices with modern research and technology to deliver effective and sustainable results. His commitment to excellence and patient care has earned him accolades and recognition within the Ayurvedic community. Dr. Navdeep Sharma, renowned Ayurvedic doctor, gains media acclaim for expertise and contributions. Call now to connect with world's senior most Ayurvedic